So, good morning, everyone. See, AI Impact Summit, it was not just about data, it was not just about technology. You need to understand AI Impact Summit was going beyond that. It was an opportunity to democratize access to AI. It was an opportunity to present our leadership. And that is why the outcomes of AI Impact Summit matters for us. That is why this declaration, New Delhi declaration that is going to be released today, that matters to us. Are you getting? So we'll try to understand what are the important, visible, tangible outcomes of AI Impact Summit. हम लोग समझेंगे कि क्या क्या visible, tangible outcomes हैं AI Impact Summit के. Okay, so let's start with the session. सबसे पहले समझना है कि AI Impact Summit जो है उसका क्या इंडिया का एम्बिशन था, व्हाई इंडिया डिसाइडेड टू बेसिकली host this summit. So one very important our ambition was to democratize access to AI, to foster multilingual AI system, and to bridge the digital divide that exists between the global north and the global south. In fact, if you would see पीएम मोदी के स्टेटमेंट को देखोगे तो व्हाट यू वुड रियलाइज कि इंडिया का जो एआई इंपैक्ट समिट था वहां पे द फोकस वाज ऑन ह्यूमैनिटी वाज एट इट्स कोर. प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ on means I think it was on 18th, he himself when he inaugurated the summit he said AI is not about just data and algorithm, rather it should be an extension of human aspiration, it should be an extension of morality, it should be an extension of ethics. So today AI Impact Summit declaration would be made. आज शाम तक इसको किया जाएगा public, so we'll see. But then by the time we need to analyze what are the important outcomes of AI Impact Summit. So कुछ facts हैं which are important from the perspective of prelims 2026. UPSC का जो prelims है 2026 as well as for state public service commissions के जो mains आने वाले हैं और जो prelims है उसके लिए भी important है. वन इंपॉर्टेंट थिंग, थीम डायरेक्ट पूछा जाता है. व्हाट वाज द थीम ऑफ एआई इंपैक्ट समिट 2026? कहां से वो थीम इंस्पायर्ड है? व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स, चक्रास, पास्ट एआई समिट? दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. Important outcomes of AI Impact Summit, and then we'll proceed for way forward. तो सबसे पहले देखते हैं what are the facts for prelims. First important thing, थीम जो AI Impact Summit का था वो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, that is for the welfare and happiness of all. This is derived from the ancient Sanskrit phrase बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, and this is derived from the teaching of Lord Buddha. ये जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो वर्ड है, it is means दो जो phrase है, this has been mentioned in Tripitak also, and at the same time this is also mentioned in Rig Veda. दोनों जगह पे ये मेंशनड है, ऋग्वेदा में भी और त्रिपिटक में भी, बहुजन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और वहां से ही ये थीम आया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. Okay, so this is the theme. Core principles. Last time also when I took the first session of AI Impact Summit, I told you the core principles are there are three foundational principles of this year AI Impact Summit. This is guided by three principles, 3P: people, progress and planet. People का मतलब क्या है? We should be having human centric AI. कैसा AI बनाना है? Human centric AI that safeguard our rights, that safeguard our means that provided access to services, that build trust, that ensures equitable benefit across various sector. Second important जो हमारा प्रिंसिपल है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल, दैट इज प्लैनेट. प्लैनेट यहां पे बोलने का मतलब है वी नीड टू एडवांस सस्टेनेबिलिटी, वी नीड टू एडवांस इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल AI by encouraging AI system. Further, we need to promote this responsible resource use that support climate action and environmental resilience. तो AI कैसा बनाना है? प्लैनेट फ्रेंडली बनाना है. AI कैसा बनाना है? ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है. एंड अल्टीमेटली
progress. This is the third foundational pillar which talks about AI कैसा बनाना है, तो basically inclusive बनाना है so that everyone can take advantage of it. So you need to enable inclusive economic and technological advancement to drive productivity, growth and development outcomes. So three foundational pillars keep in your mind. Now core principles basically जब देखोगे तो वहां पे फोकस कहां कहां पे है. One is on human welfare, मतलब human centricity is at the core. Second is environmental sustainability and third is economic transformation at the core. याद रखो, one let me tell you one thing, already economic transformation of the global north has taken place. We are talking more, we are more concerned about global south. So ये जो three sutras हैं, it emphasize three things. First, people centric development. Development कैसा हो, it must be people centric. Second important thing is you need to have impact oriented deployment. भाई AI इसलिए नहीं करना है कि सिर्फ पैसे कमाने हैं. It must be having impact on common people life. So impact oriented deployment. And third is multilateral collaboration. There should be collaboration across different organization, different countries. So ये जो तीन सूत्रास हैं, people, planet and progress, it emphasize three important things. First is impact oriented deployment, second is multilateral collaboration and third is people centric development. Coming to the seven chakras of the India AI Impact Summit. ये seven chakras हैं क्या? What are these seven chakras? So keep in your mind, ये जो seven chakras है कुछ है नहीं. अभी हमने three foundational principles पढ़े, people, progress and planet. तो वो जो तीन important pillars हैं, those have been translated into these seven chakras so that we can take multilateral actions in these areas. ये जो seven chakras हैं, अभी we'll see these chakras. तो इनको concrete outcomes देने के लिए we have converted them into seven chakras. तो ये seven chakras में पहला focus जो है वो ह्यूमन कैपिटल पे है. ह्यूमन कैपिटल कैसा बनाना है? इक्विटेबल ह्यूमन कैपिटल बनाना है सो दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड they can contribute in AI enabled future of work. Second chakra is inclusion for social empowerment. You need to focus on मोर मार्जिनलाइज्ड. हमेशा से इंडिया ने विश्वास किया है सर्वोदय में और अंत्योदय में. सो दिस इज इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट. ये जो है कॉन्सेप्ट, दिस इज सर्वोदय एंड अंत्योदय, सर्वोदय एंड अंत्योदय. ओके, सो फोकस इज ऑन मोर मार्जिनलाइज्ड. थर्ड इज कैसा एआई बनाना है? सेफ एंड ट्रस्टेड एआई. वी नीड टू हैव सेफ एंड ट्रस्टेड एआई. एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई के लिए first important thing is we need to have transparent AI, we need to have an accountable AI. Fourth important thing is science. You need to focus on frontier science technology. जैसे कि बहुत सारे LLM मॉडल्स हैं, बहुत सारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है जो कि टेक्स्ट बनाता है, इमेज, रियलिस्टिक इमेज बनाता है, स्पीच बनाता है. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट. फिफ्थ इंपॉर्टेंट चक्रा इज रिजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी. सिंपल इसका मतलब है, देखो टर्म देखोगे, रिजिलियंस, इनोवेशन, एफिशिएंसी. सो इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट एआई सिस्टम. भाई एआई डेवलप कर रहे हैं एंड द प्लैनेट इज नॉट एट इट्स कोर, देन वैसे एआई का कोई मतलब ही नहीं है. सो यू नीड टू हैव द इनोवेशन, you need to focus on efficiency, but at the same time you need to think about what exactly is happening in and around here. Climate change ho raha hai, and in the light of that you need to make resource efficient AI system, sustainable AI system. Next important thing is democratizing AI resources. AI resources should not remain like exclusive thing out of टच ऑफ मेनी ऑफ द कॉमन सिटीजनरी. तो आपको एआई के जो रिसोर्सेज हैं उनको इंक्लूसिव बनाना है, डेमोक्रेटाइज करना है, सो दैट एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस देम. एंड अल्टीमेटली एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड. एआई का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? टू अचीव सोशल गुड,
to achieve economic development across various economies, various societies like global north and global south. So this is all about the chakras. Now know about the past AI summit. थोड़ा सा cursory glance देख लेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने last session attend नहीं किया होगा, so they need to know there were before this AI Impact Summit 3 important summit took place until now. First summit happened in England, UK, and that is known by the Bletchley Park Declaration. उसके जो outcomes थे that came to know that was known as Bletchley Park Declaration. So this summit happened back in 2023, और ध्यान रखिएगा इसका जो फोकस था टू टैकल द चैलेंजेस पोज्ड बाय एआई, फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजी. इसमें मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, इंक्लूडिंग चाइना. तो सबसे पहले समझोगे यहां पर फोकस जो था दैट वाज ऑन challenges. What challenges AI poses to us? तो उन challenges को इरेडिकेट करना है. फ्रंटियर एआई क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था कि दे आर हाईली केपेबल फाउंडेशन जनरेटिव एआई मॉडल दैट कैन प्रोड्यूस रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग आउटपुट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, etc. So इन्हीं को फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं. So that is why Bletchley Park came into being. So it acknowledges both things. इन्होंने बोला कि भाई देयर आर पोटेंशियल ऑफ एआई. एआई का बहुत सारा पोटेंशियल है टू इनहांस ह्यूमन वेलबींग, बट एट द सेम टाइम एआई ऑल्सो पोजेज मल्टीपल चैलेंजेस टू अस. One more thing, first time this was recognized in Bletchley Park Declaration, it was recognized that AI related challenges cannot be tackled by any one single country alone. Rather, we all need to come together. So AI related challenges need to be addressed through the global cooperation. Consequently, this led to establishment of a regular AI safety summit. Then ये तो 2023 में हुआ. 2024 में it was organized in Seoul. Seoul summit was also important. 27 nations were part of it. India was part of it. अब यहां पर थोड़ा चेंजेस आए. देखो, ब्लेचली डिक्लेरेशन फोकस्ड ऑन एआई रिलेटेड रिस्क, लेकिन सियोल समिट में बोथ थिंग्स हैव बीन ब्रॉट टुगेदर. Actually, Seoul summit focused on AI related risk, but at the same time, it also focused on how AI can be very much, how much AI is having potential. So you need also to focus on opportunity. You need to think like AI safety with innovation and inclusivity. Means AI has potential to bring changes into our life. So it emphasized balancing AI safety with innovation and inclusivity. So this was the core theme. Consequently, what happened? Next was Paris AI Action Summit in February 2025. इसमें क्या हुआ था? France and India co-chaired the Paris AI Action Summit 2025. We both co-chaired, और यहाँ पे we made a joint declaration on inclusive and sustainable AI for people and planet. This was signed by 58 countries, including India, China, and EU. But keep in your mind, notable absentee जो इसमें थे, US and UK did not sign. This led to establishment of public interest AI platform and incubator. This was launched to bridge public-private AI efforts and promote a trustworthy AI ecosystem. इसके अलावा this also came into being ह्यूमन सेंट्रिक एआई एंड ग्लोबल प्रायोरिटीज. इसका क्या एम था? अगेन यहां पे भी पेरिस एआई एक्शन समिट में भी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, फोकस इज ऑन ह्यूमन सेंट्रिसिटी. आर यू गेटिंग? तो इसका एम क्या था? द नीड फॉर एथिकल, सेफ एंड इंक्लूसिव एआई. बोथ नीड फॉर, यू नीड टू हैव एथिकल एआई, यू नीड टू हैव सेफ एआई एंड इंक्लूसिव एआई. इंश्योरिंग बोथ, दोनों चीजों को ध्यान में रखना है. ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है एंड एआई ड्रिवन इनइक्वालिटीज को भी एड्रेस करना है. बिकॉज ऑलरेडी एआई डिवाइड जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है. सो इट फोकसेस ऑन बोथ. ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, एआई ड्रिवन इनइक्वालिटीज को भी एड्रेस करेंगे. ग्लोबल प्रायोरिटीज रिलेटेड टू एआई got divided into two parts, includes AI accessibility,
transparency, how AI would lead to job creation, sustainability, international governance. And on the other hand, the emphasis was on bridging the digital divide, ensuring AI safety, and promoting green AI. Now, this is all about the past declaration. अब let us understand what are the important visible success of AI Impact Summit. एक तो visible success तुम लोग को ये दिख रहा होगा, थोड़ा हंस भी लिया करो जो देख रहे हो, ठीक है? One visible success is this one. ठीक है? So some of the visible success of AI Impact Summit, तो एक ये है. Second, you are seeing many head of state made a visit to India. Brazil के president was also here. That is another important notable thing. ठीक है? श्रीलंका के हैं और भी बहुत सारे लोग थे. So सबसे पहले let us understand some of the visible success. First is infrastructure pledges cross $250 billion. जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेजेस है वो $250 बिलियन क्रॉस किया है with more than 20 billion in deep tech commitments. Second visible success is more than 20 heads of government and representative from 118 countries participated. Third important thing is more than 5 lakh participants, and that actually set a new Guinness Book of means record also. And more than 500 pre-summit events also happened. Ultimately, there was a strong global endorsement of India's sovereign AI model strategy. India has always focused on sovereign AI model strategy. अगर आपने India AI mission को समझा होगा, so one of the reason behind this AI mission AI जो हमने launch किया था back in 2024, so one of the objective is this sovereign AI. Okay, so across the I mean, what you call the world, this has been endorsed. Coming to next, अब समझना है कि what are the concrete outcome. This is very much important for prelims as well as mains. Pre और mains दोनों के लिए important है. तो पहले समझोगे कि concrete outcomes इसके क्या क्या हैं. तो पहला ये है कि 3 sovereign AI models we unveiled this time. फर्स्ट आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा सर्वम एआई के बारे में. सर्वम एआई जो है इट इंट्रोड्यूस 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन्ड इन इंडिया. ये जो 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं एलएलएम जो हैं इसको पूरी तरीके से इंडिया में ट्रेन किया गया है. मींस इट्स एन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड इट शो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट advanced reasoning and second is programming capability. Second is Gyani AI. Gyani AI है क्या? It's a multilingual voice model and it is right now capable of operating across 12 Indian languages. भाषणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अब उसी तरीके से ज्ञानी AI है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मल्टीलिंगुअल वॉइस मॉडल. थर्ड इज भारत जनरेशन. लेट मी टेल यू, ये AI मिशन का ही पार्ट है एंड यू कैन से कि इट इज वन ऑफ द concrete success of AI mission. So this was led by IIT Bombay and it unveiled a 17 billion parameter multilingual foundational model, and this has been optimized for Indic languages. 22 plus Indian languages are being supported through Bharat Gen AI model. ठीक है, तो ये 3 sovereign AI models got unveiled at this India AI Impact Summit. Next is Manav Vision. Prime Minister Modi ne, when PM Modi he inaugurated it, so he gave this Manav Vision. And Manav Vision is important क्योंकि इसमें जो 5 जो words हैं, these all stands for India's actually vision of AI. जो हमारा अपना जो vision है AI का, तो उनको ये 5 मानव के जो 5 वर्ड्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है. सो लेट्स गो थ्रू वन बाय वन. M stands for moral and ethical system. AI कैसा हो? AI must be driven, guided by moral principle. AI must be guided by ethical principle. So first is M. Second is A stands for accountable governance. और accountable governance के लिए what is required? You require to have transparent rule. You require to have robust oversight so that governance should be accountable, so that AI should not be misused even in the hands of government.
थर्ड इज नेशनल सॉवरेनिटी. दिस गोल इज वेरी मच क्लोजर टू इंडियाज हार्ट. ये वाला जो विजन है वो इंडिया के हार्ट का हमेशा से बहुत ज्यादा क्लोज रहा है. बेसिकली अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज हुज डेटा हीज राइट. जिनका डेटा है उनका उसके ऊपर राइट रहेगा. सो नेशनल सॉवरेनिटी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज एआई शुड बी एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव. एआई कैसा होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, so that AI can help everyone without any discrimination. AI should not be monopolized by few countries or few corporations. So this is the fourth important reason. And the fifth is valid and legitimate. AI should be lawful and variable. तो ये मानव विजन जो है, this is very much important for mains as well as prelims. ठीक है. Coming to next, मानव विजन क्या करता है? बेसिकली इट इनकैप्सुलेट समथिंग, इंडियाज एथिकल एंड सॉवरेन अप्रोच टू एआई. इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस सर्टेन प्रिंसिपल, दैट इज एआई मस्ट बी लॉफुल, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव. भाई लॉफुल भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी इंक्लूसिव ऑल्सो, सो दैट everyone get benefit out of it. It should be democratized. ठीक है. Coming to next, another important concrete outcomes of AI Impact Summit is New Delhi Frontier AI Commitments. इसमें दो pillars हैं. I'll discuss about each one of them. अभी फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था जब मैं ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन को डिस्कस कर रहा था. सो न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट है क्या? लेट मी टेल यू, दिस इज बेसिकली अ वॉलंटरी फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट. इट्स अ वॉलंटरी फ्रेमवर्क, कोई बाइंडिंग नहीं है. ये जो न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट है, दिस इज नॉट बाइंडिंग. इट्स अ वॉलंटरी फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट. It reflects collaboration between two things. One is domestic innovators and second is leading global frontier AI firms. आपने न्यूज में देखा होगा, NVIDIA जो हुआ या उसके अलावा ओपन एआई हुआ, देर आर डिफरेंट फर्म्स, दे आर एक्चुअली doing collaboration with Indian domestic innovators. So that comes under New Delhi Frontier AI Commitments. इसके दो पिलर हैं, पिलर्स को ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट पिलर क्या है? It focuses on advancing understanding of real world AI usage. Real world में AI का यूसेज कैसे होगा? Are you getting? रियल वर्ल्ड में AI यूसेज कैसे करेंगे? एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू स्ट्रेंथन मल्टीलिंगुअल एंड कंटेक्चुअल इवैल्यूएशन. भाई वर्ल्ड जो है वो डिवर्स है. You cannot just promote AI only in English language or the language of the Britishers or the language of European countries. You need to understand African countries may have completely different needs than you. You need to take into account contextual evaluation. So ये जो दो पिलर हैं इनके गोल, these are the goals of them. पिलर 1 का गोल क्या है? To anticipate risk while take advantages of opportunity due to AI diffusion. You need to understand what are the risks that may come due to the frontier AI, but at the same time you also need to recognize that it throws multiple opportunities. So that also need to be taken, that also need to be taken into. Second goal is to ensure AI system function effectively across underrepresented languages and context. Yahan pe basically we are talking about global south. We are right now talking about global south. Coming to next, another important concrete outcomes is we talked about AI across different sectors. In agriculture, आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हो, that is यूपीएससी विद दीपक प्रकाश, यूपीएससी विद दीपक प्रकाश, तो वहां पे अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो मैंने ऑलरेडी इन पे डिटेल में वहां पे मैंने इंफोग्राफिक के थ्रू प्रोवाइड किया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत विस्तार, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सही एंड बोध. तो ये इंपॉर्टेंट है. इन एग्रीकल्चर दिस इज व्हाट वी हैव डन. इन एग्रीकल्चर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड भारत विस्तार, जिसका अल्टीमेट एम है to enhance productivity in agriculture, at the same time to make
agriculture sustainable. So that's the one thing. For women and girls, this is what we have introduced: AI by her and Yuva AI challenges. So this empowers women and young innovators of young girls innovators of 13 to 21 years of age. In healthcare, we have brought Sahi. Sahi stands for a strategy for AI in healthcare for India, and both stands for benchmarking open data platform for health AI. So these are the AI across key sectors. Now, India AI Impact Summit Declaration, which is also going to be known by the name न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई, आसाम में ये रिलीज होगा. बट these are going to be the some of the important things you would find over here. Number one, ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई है, मोर देन 1880 कंट्रीज आर गोइंग मींस हैव ऑलरेडी साइंड द डिक्लेरेशन. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इंडोर्स्ड एआई एग्रीमेंट्स टू डेट. अभी मैंने बताया था पेरिस में 50 प्लस थे, लेकिन इंडिया वाला जो एआई इंपैक्ट समिट है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, उसमें मोर देन 80 कंट्रीज आर विलिंग टू मींस इनफैक्ट दे हैव साइंड द डिक्लेरेशन. सेकंड इज, this is not a binding declaration, this is a non binding pledge. Yahan pe focus is on shared goals. And third important thing is it emphasizes inclusive AI development, ensuring multiple benefit reach the global south and marginalized communities. तो ये इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट पे, जहां पे अपना जो फोकस है, इंडिया का जो फोकस है, दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई, so that benefit can reach to global south, so that this regional diversity can end, so that multilingual needs can be accommodated, diverse needs can be accommodated, needs of marginalized communities could be accommodated. Next AI Impact Summit is to be organized in Geneva. अगला जो AI Impact Summit है, उसको जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. So keep this thing in your mind. What should be the way forward? Our guide towards AI should always be dictated by these things. First is social impact. हमेशा से ध्यान रखना है AI के लिए. One important thing is healthcare. How we can use AI for healthcare. How we can use AI for educational reform. Because we need to move beyond rote learning so that we can focus on creativity, critical thinking and problem solving. ये जो अभी fiasco हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, that fiasco happened because we still do not promote, our universities still do not promote innovation, our universities still do not promote creativity. अभी भी चीजों को कहीं से भी हम प्लेजराइज करते हैं, and it is quite normal, it is quite mundane. That is why this fiasco happened. तो यहां से one more thing we need to learn कि भाई education reform is the need of the hour. We cannot promote just rote learning, rather we need to promote creativity. Second is promotion of responsible AI. This needs to be promoted, and ultimately by global leadership that we have already shown, keep continuing shaping AI norms internationally. We need to keep positioning India as a voice for global south. This is for the day. Bye bye, take care.